बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स। फर्स्ट ईयर इंग्लिश में पहले लेक्चर में खुशामदीद। ये शॉर्ट स्टोरी है बटन बटन। इसको लिखा है रिचर्ड मैथसन ने और इसकी हम ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। ट्रांसलेशन पर जाने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा मैं कि शॉर्ट स्टोरी क्या होती है। व्हाट इज़ द शॉर्ट स्टोरी? Short story is a short narrative focusing on single emotion, having less characters with a single strand of plot. Comparatively, novel is a long narrative focusing on more than one emotion, having many characters with several strands within a plot. यानी शॉर्ट स्टोरी किसी एक जज्बे पर फोकस करती है। इसमें कम किरदार होते हैं और कहानी के अंदर एक ही धागा होता है जो चलता है। और इसको समझने के लिए इसका मुवाज़ना हम नावल से कर सकते हैं कि नावल मुवाज़नतन एक लंबी कहानी होती है, उसमें ज़्यादा इमोशंस पर फोकस किया जाता है, ज़्यादा किरदार होते हैं। इसी तरह से एक ही प्लॉट के अंदर कहानियाँ एक से ज़्यादा चलती हैं जो आखिर में जाकर मिल जाती हैं। Lesson 01. Button Button by Richard Matheson. Pre-reading. Aesop, born 620, died 564 BC, was a Greek fabulist and storyteller known for fables now collectively famous as Aesop's Fables. Although his existence remains unclear and no writings by him survive, numerous tales credited to him were gathered across the countries and in many languages in a storytelling tradition that continues to this day. Many of the tales associated with him are characterized by animal characters. In his fables, Aesop always taught some wisdom by telling a story. Here we can recall the greedy dog, in which Aesop focused on the emotion of greed. Richard Matheson, in this short story, Button Button, is centering the emotion of greed in almost Aesop's way. Here the setting has been completely changed from ancient to modern that appeals to the moderns. Let's start reading the text and enjoy it. The package was lying by the front door, a cube-shaped carton sealed with tape, their name and address printed by hand, Mr. and Mrs. Arthur Lewis, 217E, 37th Street, New York, New York 10016. Norma picked it up, unlocked the door, and went into the apartment. It was just getting dark. After she put the lamb chops in the broiler, she sat down to open the package. Inside the carton was a push-button unit fastened to a small wooden box. A glass dome covered the button. Norma tried to lift it off, but it was locked in place. She turned the unit over and saw a folded piece of paper, scotch taped to the bottom of the box. पैकेज सामने के दरवाजे के पास पड़ा था। एक मकाब की शक्ल का कार्टन जिस पर टेप बंद थी। उनका नाम और पता हाथ से प्रिंट किया गया था। मिस्टर एंड मिसेस आर्थर लेविस, 721 E37th स्ट्रीट, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क 10016। नॉर्मा ने उसे उठाया, दरवाज़ा खोला और अपार्टमेंट में चली गई। अभी अंधेरा हो रहा था। ब्रायलर में मेमने के टुकड़े डालने के बाद वो पैकेज खोलने बैठ गई। कार्टन के अंदर एक पुश बटन यूनिट था जो लकड़ी के एक छोटे से डब्बे से जुड़ा हुआ था। शीशे के गुंबद ने
बटन को ढांप रखा था। नॉर्मा ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो जगह पर बंद था। उसने यूनिट को पलट कर देखा और डब्बे के नीचे टेप से चिपकाया एक तय किया हुआ कागज का टुकड़ा देखा। She pulled it off. Mr. Stewart will call on you at 8 p.m. Norma put the button unit beside her on the couch. She reread the typed note, smiling. A few moments later, she went back into the kitchen to make the salad. The doorbell rang at 8 o'clock. I'll get it, Norma called from the kitchen. Arthur was in the living room, reading. There was a small man in the hallway. He removed his hat as Norma opened the door. Mrs. Lewis? He inquired politely. Yes? I'm Mr. Stewart. Oh, yes. Norma repressed a smile. She was sure now it was a sales pitch. उसने उसे खींच लिया। मिस्टर स्टीवार्ड आपको रात 8 बजे कॉल करेंगे। यानी ये उस कागज़ के टुकड़े पर लिखा हुआ था। नॉर्मा ने बटन यूनिट अपने पास सोफे पर रख दिया। उसने मुस्कुराते हुए टाइपशुदा नोट दोबारा पढ़ा। चंद लम्हों बाद वो वापस किचन में सलाद बनाने चली गई। 8 बजे दरवाजे की घंटी बजी। मैं ले लूँगी? नॉर्मा ने किचन से आवाज़ दी। आर्थर कमरे में पढ़ रहा था। दालान में एक छोटा आदमी था। नॉर्मा ने दरवाज़ा खोलते ही अपनी टोपी हटा दी। लेविस, इसने शाइस्तगी से पूछा। हाँ, मैं मिस्टर स्टीवार्ड हूँ। जी हाँ, नॉर्मा ने मुस्कुराहट दबाई। उसे यकीन था कि अब ये सेल्स पिच है कोई। May I come in? Asked Mr. Stewart. I'm rather busy, Norma said. I'll get you your watch immaculate. Though. She started to turn. Don't you want to know what it is? Norma turned back. Mr. Stewart's tone had been offensive. No, I don't think so, she replied. It could prove very valuable, he told her. Monetarily, she challenged. Mr. Stewart nodded. Monetarily, he said. Norma frowned. She didn't like his attitude. What are you trying to sell? She asked. I'm not selling anything, he answered. Arthur came out of the living room. Something wrong? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मिस्टर स्टीवार्ड ने पूछा। मैं कदरे मसरूफ़ हूँ, नॉर्मा ने कहा। क्या तुम जानना नहीं चाहती कि ये क्या है? नॉर्मा वापस मुड़ी। मिस्टर स्टीवार्ड का लहजा जारहाना था। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, उसने जवाब दिया। ये बहुत कीमती साबित हो सकता है, उसने उसे बताया। माली तौर पर? उसने चैलेंज किया। मिस्टर स्टीवार्ड ने सर हिलाया। माली तौर पर, उन्होंने कहा। नॉर्मा ने झुकाया सर। उसे इसका रवैया पसंद नहीं आया। आप क्या बेचने की कोशिश कर रहे हैं? उसने पूछा। मैं कुछ नहीं बेच रहा हूँ, उसने जवाब दिया। आर्थर कमरे से बाहर आया। कुछ गड़बड़ है? Mr. Stewart introduced himself. Oh, the dash! Arthur pointed toward the living room and smiled. What is that gadget, anyway? It won't take long to explain, replied Mr. Stewart. May I come in? If you're selling something dash, Arthur said. Mr. Stewart shook his head. Not. Arthur looked at Norma. Up to you, she said. He hesitated. Well, why not, he said. They went into the living room and Mr. Stewart sat in Norma's chair. He reached into an inside coat pocket and withdrew a small sealed envelope. Inside here is a key to the bell unit dome, he said. He set the envelope on the chair side table. The bell is connected to our office. What's it for? Asked Arthur. If you push the button, Mr. Stewart told him, somewhere in the world someone you don't know will die. In return for which you will receive a payment of $50,000.
मिस्टर स्टीवर्ट ने अपना तारुफ कराया। ओह दी। आर्थर ने कमरे की तरफ इशारा किया और मुस्कुराया। वो गैजेट क्या है? वैसे भी इसकी वजाहत करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, मिस्टर स्टीवर्ट ने जवाब दिया। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ अगर आप कुछ बेच रहे हैं? आर्थर ने कहा। मिस्टर स्टीवर्ट ने सर हिलाया। मैं नहीं। आर्थर ने नॉर्मा की तरफ देखा। तुम पर मुनहसर है, उसने कहा। वो हिचकिचाया। अच्छा, क्यों नहीं? उन्होंने कहा। वो कमरे में चले गए और मिस्टर स्टीवर्ट नॉर्मा की कुर्सी पर बैठ गए। वो अंदर की कोट की जेब तक पहुंचा और एक छोटा सा मेहरबान लिफाफा वापस ले लिया। यहाँ के अंदर बेल यूनिट गुंबद की एक चाबी है, उसने कहा। उसने लिफाफा कुर्सी साइड टेबल पर रखा। घंटी हमारे दफ्तर से जुड़ी हुई है। ये किस लिए है? आर्थर ने पूछा। अगर आप बटन दबाएंगे, मिस्टर स्टीवर्ट ने उससे कहा, दुनिया में कहीं ऐसा शख्स मर जाएगा जिसे आप नहीं जानते, जिसके बदले में आपको $50,000 की अदायगी मिलेगी। Norma stared at the small man. He was smiling. What are you talking about? Arthur asked him. Mr. Stewart looked surprised. But I've just explained, he said. Is this a practical joke? Asked Arthur. Not at all. The offer is completely genuine. You aren't making sense, Arthur said. You expect us to believe Dash. Whom do you represent? Demanded Norma. Mr. Stewart looked embarrassed. I'm afraid I'm not at liberty to tell you that, he said. However, I assure you, the organization is of international scope. I think you'd better leave, Arthur said, standing. Mr. Stewart rose. Of course. And take your button unit with you. Are you sure you wouldn't care to think about it for a day or so? Arthur picked up the button unit and the envelope and thrust them into Mr. Stewart's hands. He walked into the hall and pulled open the door. नॉर्मा ने छोटे आदमी को घूर कर देखा। वो मुस्कुरा रहा था। आप क्या कह रहे हो? आर्थर ने उससे पूछा। मिस्टर स्टीवर्ट ने हैरत से देखा। लेकिन मैंने अभी वजाहत की है, उन्होंने कहा। क्या ये कोई अमली मजाक है? आर्थर ने पूछा। हरगिज़ नहीं, पेशकश बिल्कुल हकीकी है। आर्थर ने कहा। आपको कोई मतलब नहीं है? आप हमसे यकीन करने की तवक्को करते हैं? आप किसकी नुमाइंदगी करते हैं? नॉर्मा ने मुतालबा किया। मिस्टर स्टीवर्ट शर्मिंदा नज़र आए। मुझे डर है कि मैं आपको ये बताने के लिए आज़ाद नहीं हूँ, उसने कहा। ताहम मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ये तंजीम बैनुल-अक़वामी दायरा कार की है। मिस्टर स्टीवर्ट उठे। यकीनन, और अपना बटन यूनिट अपने साथ ले जाओ। क्या आपको यकीन है कि आप एक दिन के लिए इसके बारे में सोचने की परवाह नहीं करेंगे? आर्थर ने बटन यूनिट और लिफाफा उठाया और उन्हें मिस्टर स्टीवर्ट के हाथों में थमा दिया। वो हॉल में चला गया और दरवाज़ा खींच के बंद कर दिया। I'll leave my card, said Mr. Stewart. He placed it on the table by the door. When he was gone, Arthur tore it in half and tossed the pieces onto the table. Norma was still sitting on the sofa. What do you think it was? She asked. I don't care to know, he answered. She tried to smile but couldn't. Aren't you curious at all? No. He shook his head. After Arthur returned to his book, Norma went back to the kitchen and finished washing the dishes. Why won't you talk about it? Norma asked. Arthur's eyes shifted as he brushed his teeth. He looked at his reflection in the bathroom mirror. Doesn't it intrigue you? It offends me, Arthur said. I know, but Norma rolled another curler in her hair. Doesn't it intrigue you, too? मैं अपना कार्ड छोड़ दूंगा, मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा। उसने उसे दरवाजे के पास मेज़ पर रखा
जब वो चला गया तो आर्थर ने उसे आधा फाड़कर मेज पर फेंक दिया। नॉर्मा अभी तक सोफे पर बैठी थी। तुम्हें क्या लगता है? उसने सोचा। मुझे जानने की कोई परवाह नहीं है, इसने जवाब दिया। उसने मुस्कुराने की कोशिश की लेकिन नहीं कर सकी। क्या तुम बिल्कुल मुतजस्सिस नहीं हो? नहीं। उसने सर हिलाया। जब आर्थर अपनी किताब पर वापस आया तो नॉर्मा वापस किचन में चली गई और बर्तन धोने से फारग होकर बोली, आप इसके बारे में क्यों नहीं बोलेंगी? नॉर्मा ने पूछा। दांत साफ करते ही आर्थर की नज़रें हट गईं। उसने अपने अक्स को देखा बाथरूम के आईने में। क्या ये आपको दिलचस्प नहीं बनाता? ये मुझे नाराज़ करता है, आर्थर ने कहा। मैं जानता हूँ, लेकिन नॉर्मा ने एक और कर्लर अपने बालों में घुमाया। क्या ये आपको भी परेशान नहीं करता? You think it's a practical joke? She asked as they went into the bedroom. If it is, it's a sick one. Norma sat on her bed and took off her slippers. Maybe it's some kind of psychological research. Arthur shrugged. Could be. Maybe some eccentric millionaire is doing it. Maybe. Wouldn't you like to know? Arthur shook his head. Why? Because it's immoral, he told her. Norma slid beneath the covers. Well, I think it's intriguing, she said. Arthur turned off the lamp and leaned over to kiss her. Good night, he said. Good night. She patted his back. Norma closed her eyes. $50,000, she thought. आपको लगता है कि ये एक अमली मजाक है? उसने बेडरूम में जाते हुए पूछा। अगर ये है तो ये बीमार है। नॉर्मा अपने बेड पर बैठ गई और चप्पल उतार दी। शायद ये किसी किस्म की नफसियाती तहकीक है। आर्थर ने कंधे उचकाए। हो सकता है, शायद कोई सनकी करोड़पति ये कर रहा हो। शायद। क्या आप जानना पसंद नहीं करेंगे? आर्थर ने सर हिलाया। क्यों? क्योंकि ये गैर इखलाकी है। उसने उसे बताया। नॉर्मा को रुके नीचे खिसक गई। ठीक है, मुझे लगता है कि ये दिलचस्प है, उसने कहा। आर्थर ने लैंप बुझा दिया और उसे चूमने के लिए झुक गया। शब बखैर, उसने कहा। शब बखैर। उसने उसकी पीठ थपथपाई। नॉर्मा ने आंखें बंद कर लीं। $50,000, उसने सोचा। In the morning, as she left the apartment, Norma saw the card halves on the table. Impulsively, she dropped them into her purse. She locked the front door and joined Arthur in the elevator. While she was on her coffee break, she took the card halves from her purse and held the torn edges together. Only Mr. Steward's name and telephone number were printed on the card. After lunch, she took the card halves from her purse again and scotch-taped the edges together. Why am I doing this? She thought. Just before 5, she dialed the number. Good afternoon, said Mr. Steward's voice. Norma almost hung up but restrained herself. She cleared her throat. This is Mrs. Lewis, she said. Yes, Mrs. Lewis, Mr. Steward sounded pleased. I'm curious. सुबह जब वो अपार्टमेंट से निकली तो नॉर्मा ने मेज पर कार्ड के आधे हिस्से देखे। बेताबी से उसने उन्हें अपने पर्स में डाला। उसने सामने का दरवाज़ा बंद कर दिया और आर्थर के साथ लिफ्ट में शामिल हो गई। जब वो काफ़ी के वक्फे पर थी, उसने अपने पर्स से कार्ड के आधे हिस्से निकाले और फटे हुए किनारों को एक साथ पकड़ लिया। कार्ड पर सिर्फ मिस्टर स्टीवर्ट का नाम और टेलीफोन नंबर छपा हुआ था। दोपहर के खाने के बाद उसने अपने पर्स से कार्ड के आधे हिस्से दोबारा निकाले और स्कॉच से किनारों को एक साथ टेप किया। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? उसने सोचा। 5 से ठीक पहले उसने नंबर डायल किया। गुड आफ्टरनून, मिस्टर स्टीवर्ट की आवाज़ ने कहा। नॉर्मा ने तकरीबन फ़ोन बंद कर दिया, लेकिन खुद को रोक लिया। उसने अपना गला साफ किया। ये मिसेस लेविस हैं, उसने कहा। हाँ, मिसेस लेविस, मिस्टर स्टीवर्ट ने खुशी से कहा। मैं बेताब हूँ।